नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के लेसन से आफ्टर अटेनिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, a person who accepts the path of the devotional service is not bereft of the result derived from the studying Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, and giving charity or pursuing philosophical and the creative activities. ये चैप्टर इसके बाद आफ्टर अटेनिंग द सुप्रीम गॉड सुप्रीम मीन्स गॉड हेड, सुप्रीम गॉड हेड, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुमको कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। तू मेरा मित्र है, मुझे पसंद है और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूययो ज्ञानम विज्ञानम सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड said, "My dear Arjun, because you are never envious to me or of me, I shall impart you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of the material existence." What are the miseries of the material existence? You will be relieved. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened to this. And this hearing process is recommended in the Srimad Bhagavad Gita. And the messages of the Supreme Personality of the Godhead are full of the potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed among the devotees. This cannot be achieved by the association of the mental knowledge and speculators and academic scholars. For it is realized knowledge. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavad Gita. This knowledge cannot be gained into an educational institution, or any student cannot get this knowledge, because this knowledge comes after hearing and hearing and hearing, more times hearing. राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षो गमम धर्म्यम सुसुखम सुखम कर्तुम अव्ययम. This knowledge is the king of the education. Whatever education, as a human being or as a student or as a shishya, we want to seek from our institutions, our teachers, our preceptors, that cannot be attained like this education and this knowledge. The most sacred of all the sacred, it is the present knowledge, it is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of the religion. It is everlasting and it is joyfully performed. This chapter of the Bhagavad Gita is called the king of the education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. इससे पहले भी जितनी भी फिलॉसफी बताई गई है, जितने भी लेसन दिए गए हैं, जितने भी उपदेश दिए गए हैं, उन सब में से ये एजुकेशन जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो जो अर्जुन को दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है, और इसमें सारी डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी इन्वॉल्व हैं. अश्रद्धानाम पुरुषाणाम धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. Here Lord Krishna is confirming that those who are not faithful to the devotional service of the Almighty God cannot attain Him or conquer in me. Therefore they return to the path of the birth and death in this material world. So whatever the material world we see and we are living, people usually come and go, रिटर्न होते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बर्थ एंड डेथ के चक्कर में
पड़े रहते हैं। यथा तरुर्मूला निषेचनम तृप्यन्ति तत्स्कंधान भुजोपवा शाखा प्रणोपहारच्यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहानम् अच्युतेया. By giving water to the root of the trees, one satisfied its branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental services of the Supreme Lord, one automatically satisfied all the demigods and other living entities. Here, the comparison has been given that by giving water to root of trees, if you are irrigating one root of a tree, it means you are giving water to its branches, twigs, and leaves also. Same way, if you are supplying food to the stomach, that food satisfied all the senses of the body. Same way, if you are engaged in transcendental service of that Almighty God, Supreme Lord, it means that you are satisfying all other demigods and other living entities in the world. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give all other engagement and adopt the services of the Supreme Lord Krishna, the personality of the Godhead, if one is convinced of this philosophy of life, that is faith. Now, the developed and development of that faith is the process of the Krishna consciousness. There are three divisions of the Krishna consciousness. Men, jo whatever the category of the men have been clarified and have been explained here. One, they are the three types of people. One who have no faith, they are the third one category. Even if engaged, they cannot achieve the officially highest perfection stage. Most probably they will slip after sometimes. They may become engaged, but because they have not complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue इन श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस. जैसा कि आप लोग देखते होंगे धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत लोग आते हैं, बड़े ढंग से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लगते हैं जोर जोर शोर से, उनका कोई न कोई प्रयोजन होता है. उस प्रयोजन के पूरा होने के बाद उनका डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्जन होने के बाद वो हट जाते हैं. तो इस तरह के लोग जो है थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी के लोग वो हैं जिनमें फर्म फेथ होता है भगवान श्री कृष्णा पे, भगवान पे, और उस पर विश्वास करते हैं. दूसरी कैटेगरी के लोग वो है जो एडवांस होते हैं अंडरस्टैंडिंग करने में, डिवोशनल स्क्रिप्चर में, बट हु ऑटोमेटिकली है फर्म फेथ इन कृष्णा, उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में फर्म फेथ रखते हैं. ऐसे लोग दूसरी कैटेगरी के हैं. तो सबसे टॉप की कैटेगरी पहली कैटेगरी है जिसमें फर्म फेथ होता है. दूसरी कैटेगरी है कि डाइवर्जन थोड़ा हो सकता है लेकिन वो फर्म फेथ में रहते हैं. तीसरी कैटेगरी ये होती है कि जो लोग दिखावटी आते हैं और चले जाते हैं. दे डोंट हैव फुल फेथ और कंप्लीट फेथ इन श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस. थैंक यू वेरी मच. आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें. थैंक यू.